Hi, this is Jimmy Shergill and you're watching Bollywood Hungama. We have this hugely talented Jimmy Shergill who keeps on getting younger by the day actually. And first of all, Jimmy, pleasure having you back on Bollywood Hungama. Thank you so अभी much. आपने जब enter किया मैंने कहा I felt that we interviewed you at Marriott I think a year back or something. I was like that you were looking even younger than before. So ये इसका क्या राज है? पंजाबी blood? What exactly is it? देख रहे हो आप टेंशन है जितनी लोग हैं उतने जल्दी वेट लूज होगा. अच्छा. No, but I think freshness जो होती है स्किन के ऊपर वो I think tension से नहीं आएगी वो तो I think. नहीं एक्चुअली टॉकिंग स्लाइटली सीरियसली अबाउट इट आई थिंक हुआ क्या था कि इन 2011 आई हैड दिस मेजर बैक इशू व्हिच हैपेंड इन माय नेक wherein I was advised immediate surgery. So for a minute you think that your career is over, your life is over because it's not a small thing. It's just that my family didn't want me to go in for surgery, so we tried the alternative, these things. So since then what has happened is one has to become a little particular and about your regime, your exercise and everything like that, which has to be a mix of yoga and running and training and stuff like that. So because हमारा action करना पड़े कुछ करना पड़े तो 1000 बार you have to think of the consequences, safety. So it's just that एक point पे ऐसा कोई झटका आपको लगता है तो उसके बाद थोड़ा सा you become slightly careful about things and you try to become slightly disciplined so that thing, I mean it can come back any time, sure. But you have to just try and this thing. So I think that's what Right. is yeah. Great. So we hope that your back things get sorted completely. Now Shorgul, very interesting promo and controversial promo as well. And your character is being said to be based on Sangeet Som, a leader in UP. And the premise is being said that it's around Muzaffarnagar, right, as well. How do you react when the sort of responses that have been coming to your guys? And I think your character is looking very powerful in terms of the entire element that you're trying to convey. It's coming across very nicely. First of all, how I've clarified this before also that it's not a biopic. Because when it's a biopic, we all know there is a procedure of going ahead. You need to take NOCs from the people involved in a biopic, the real characters. Sure. उनसे आप real लोगों से आप NOCs लेते हैं, उसके बाद फिर actors जाके उनको मिलते हैं, उनके mannerisms देखते हैं कि ये आदमी कैसे dress up करता है, and the resemblance has to be really close to that person, so you know kind of shape yourself according to that or whatever. First of all, you're finalized in terms of a cast also if there is some kind of resemblance with the person and all that whatever. But when I was narrated the script by Pranav, the thing was that ये कहानी है basically है love story with the backdrop of politics that is happening. उसमें भी क्या है कि जैसे अब कोई भी चीज़ होती है एक बार किसी को पता लग जाती है वो उसी चीज़ के ऊपर हैमरिंग स्टार्ट हो जाती है. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज पिक्ड अप फ्रॉम रियल लाइफ इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड all across maybe UP because it's a UP based film, and what has happened is that all those things have been put together to form a backdrop of this love story. You know what I mean? No, fair so enough. now I the totally thing is understand, now sorry. Some of the references I think are very obvious. So, but I can understand your predicament as well. What you're saying, I think is that is very good for the presenters. That is very good for the people who are releasing the film. That suddenly it comes in the limelight. Maybe that was the intention to make heads turn in terms of whatever. But I, as an actor, am more concerned about the fact that if I was doing something like this. If I knew from the beginning that I'm doing a biopic, my take would have been completely different on the entire issue. The issue right now is, when you ask me, I would say that मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी फिल्म को पब्लिसिटी मिल रही है, वो किसी भी लेवल पे मिल रही है. हम एक्टर्स हैं, हमको पता होता है कि भाई ठीक है ये फिल्म के लिए अच्छा है, उसको पब्लिसिटी मिल रही है, ठीक है. जी जी. When fingers start getting pointed towards you and your integrity is when your integrity is questioned. So मेरे साथ ये हो रहा है. So मेरी सिचुएशन ये. और मैं अगर ऐसी चीज़ों में मानूँ तो आप देखोगे मेरा करियर, मेरे को 20 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं इस इंडस्ट्री में. मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ की ही नहीं है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें ये हो जाएगा या इसमें ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाएगी. तो मैंने एक क्लीन दिल से एक किरदार जो मुझे पसंद आया, जो बहुत ही पावरफुल और उस टाइप का था, और जब आए तो अच्छी लाइनें, अच्छे डायलॉग्स, अच्छा सारा कुछ.
इज अ पावरफुल। अब हर फिल्म में मैं एक गुड गाय तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा ग्रे मिले, कुछ विलन मिले तो मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जो कि मेरा टेक शुरुआत में भी था। मे बी ड्रेसिंग अप को लेके जब इन्होंने कहा था कि वो हाफ जैकेट्स एंड ऑल पहनेंगे एंड ऑल, तो मैंने कहा था यार वो साहिब की तरह नहीं लगना चाहिए वो कैरेक्टर। तो दे वर वेरी क्लियर कि वो साहिब जो है वो तो साहिब है, उसका अलग रुतबा है। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट a politician, he was a young politician, he was very ambitious, वो कुछ भी करेगा to reach the level that he wants to reach। right। तो उसकी वजह से उसके जो भी शेड्स हैं, ग्रे बोलने सब, हम सभी लोग ग्रे होते हैं, हम सब कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, कुछ गलत करते हैं, सारा कुछ होता है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो जो एक इशू है, वो उस टाइम पे अगर मेरे को ये होता कि बॉस ये तो हम बायोपिक बना रहे हैं मगर हम ये कर रहे हैं वो है, तो मेरा टेक एज एन एक्टर ऑन द एंटायर थिंग वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। आई वुड हैव सेड कि चलो उनको मिलके आते हैं। नो एब्सोल्युटली, इट्स फाइन, ठीक है ना? इट्स एब्सोल्युटली फाइन।